Hello everyone. Today we will discuss bottom-up parsing technique. Bottom-up parsing technique is an attempt to derive the given string from leaf to root. या हम कह सकते हैं bottom to top, that signify कि हम leaf से start करेंगे और root पर पहुंचेंगे. So it involves the process कि हम input string को read करें one character at a time and उसको रिड्यूस करके हम कहाँ तक पहुंच जाएं, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर विच इज अ नॉन टर्मिनल. सो दिस इज एन अटेम्प्ट. बॉटम ऑफ पासिंग टेक्निक इज अटेम्प्ट टू डिराइव द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम बॉटम मींस लीफ टू टॉप मींस रूट. इन दिस मेथड द लीफ इज द गिवन इनपुट स्ट्रिंग टू बी पास, जिसको हमें पास करना है वो है, एंड द रूट इज द स्टार्ट सिंबल. सो व्हाट वी डू हियर, we just converting from the leaf string या हम कह सकते हैं terminal string into the corresponding non-terminal, so we reach to the start symbol by applying the successive replacement of the string with the non-terminal. So there is an example. Suppose we have a grammar e tends to e plus e tends to e star e tends to id. Now this is the string to be passed, id plus id star id. Now what we do, suppose this id plus id star id, this is the parse tree which has been generated after the bottom of applying the bottom of parsing techniques. हमें करना क्या है कि ये लीफ है हमारा, मीन्स id plus id star id, एक एक कैरेक्टर्स को रीड करते जाना है इनपुट स्ट्रिंग को, और जैसे ही कोई इनपुट स्ट्रिंग या हम सब स्ट्रिंग किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड से मैच करता है, it will replace the successive string, replace the current string with the corresponding non-terminal. Suppose this id is, we first read id, हमने सबसे पहले क्या रीड किया id. Now id किसी प्रोडक्शन का राइट साइड है, हाँ है. id किसका है, e का. So it will decompose in e. फिर हमने क्या रीड किया, ई के बाद प्लस रीड किया. क्या ई प्लस हमारा किसी प्रोडक्शन का राइट साइड है, नहीं, एग्जैक्टली ओवरऑल एज अ होल नहीं है. सो वी रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर वी रीड दिस इज आईडी एंड इट इज कन्वर्टेड इन या रिप्लेस्ड बाय कैपिटल ई अगेन. नाउ नेक्स्ट वी रीड स्टार. सो ई स्टार में हमारा कोई कह सकते हैं राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन नहीं है, सो वी कंटिन्यू रीडिंग द नेक्स्ट सिंबल टू नेक्स्ट सिंबल. नाउ जब हमने ये आईडी रीड किया, आईडी भी किस में रिड्यूस हो गया, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ई. नाउ वी हैव ई स्टार ई. नाउ ई स्टार ई इज आल्सो अ स्ट्रिंग, और या वी कैन से राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन, सो इट विल रिप्लेस्ड बाय दिस कैपिटल ई. Now e plus e again we says there is a right side of the production e plus e, so it will replaced with capital E. So we reach to the start symbol. This attempt is called bottom of parsing techniques. The basic bottom of parsing technique is your shift reduce parsing techniques, in which we just perform the same things. Means हम एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे, स्ट्रिंग प्रोडक्शन से कंपेयर करते जाएंगे, एंड इफ इट इज फाउंड, if there is a match is found, then we replace the corresponding string with the non-terminal, left side of the non-terminal, and applying this successive replacement we reach to the start symbol. This is called bottom of parsing techniques. Now we look up the rightmost derivation of a given string. इस string का हमने क्या generate किया, rightmost derivation. Now look at the rightmost derivation. All of you know that in rightmost derivation we explore the rightmost non-terminal with the corresponding right side of the string of the production. So e gives e plus e. The rightmost symbol is this e. This e is explored in e star e, and so e star is converted e into id. This e is again explored with id. Then rightmost is this non-terminal, then it is replacing id. Now if we just look up the reverse of the process, अगर हम इसका reverse process देखें तो what we do, we read the current input symbol id and it is reduced in this capital non-terminal capital E. So it will find in the right side of the production कि ये id हमारा इससे मैच कर गया. Now it will replace in e. Again next
what we do, this id is replaced in capital E. Now next, again this id is replaced in capital E. Then this E star E is replaced in capital E, and this E plus E is replaced in capital E. So in the whole process हमने यहाँ पे ये देखा कि राइट साइड से हम इनपुट स्ट्रिंग को रीड करते जा रहे हैं, और अगर वो स्ट्रिंग हमारा किसी प्रोडक्शन का राइट साइड है देन हम उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग. So we say that the bottom up parsing always generate the rightmost derivation in reverse. Rightmost derivation in reverse means ये हमारा इनपुट सिंबल से इनपुट स्ट्रिंग है, इसको हम राइटमोस्ट डेरिवेशन के रिवर्स के थ्रू देखते जाएं तो इट विल derive या pass the string in reverse order of the rightmost derivation. So there is an important points which is called handle. What is handle? Now handle is says कि जो भी हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे मिलता है जिससे हम उस नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडल. सो इफ वी डिफाइन हैंडल, हैंडल इज अ स्ट्रिंग appear in right sentinel form, right sentinel form that match with the right hand side of any production and whose replacement with left hand side of non-terminal gives one attempt to derive the string. This is कहने का मतलब क्या है कि इसमें what is handle? Handle is a string that appear in the right sentinel form. What is right sentinel form? All the intermediate steps of the rightmost derivation is called right sentinel form. Each string, this one is all called right sentinel form. तो अगर किसी right sentinel form का वो string जिसके रिप्लेस जो इसी प्रोडक्शन के राइट साइड से मैच करता है और जिसके रिप्लेसमेंट से वी गो अहेड इन द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग द स्ट्रिंग, देन दैट इज सच स्ट्रिंग इज कॉल्ड हैंडल. सो द आवर बॉटम ऑफ पार्सिंग टेक्निक्स व्हिच whose first basic parsing technique is shift reduce parsing. It is also known as handle pruning parsing techniques, in which we just prune our handle to the corresponding non-terminal and applying the successive method we reach to the start symbol of the grammar. So it is also known as handle pruning parsing techniques. So we next discuss what is shift reduce parsing. The shift reduce parser is the basic implementation of bottom up parsing technique which uses a stack and input buffer. It performs two operations, shift and reduce. What is shift operation? Shift operation is basically push the current input symbol onto the stack and move the next input buffer pointer to the next symbols. So it push the current input symbol onto the stack and append the input pointers. Similarly, reduce A to alpha, that signifies that it will pop the string which appear on the top of the string. Means हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा हैंडल रिकॉग्नाइज हुआ है, जो हमारे स्ट्रिंग स्टैक के ऊपर है सब स्ट्रिंग, उस सब स्ट्रिंग को हम पॉप करेंगे और उसकी जगह पे ग्रामर से उसका करस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल को पुश कर देंगे. दैट इज कॉल्ड रिड्यूस बाई अ प्रोडक्शन ए टू अल्फा. इनिशियली द स्टैक कंटेन डॉलर इन इट and input buffer contain w and dollar, w followed by dollar. W is the string to be parsed. ठीक. And finally when the stack is empty and stack contain only the start symbol of the grammar and input buffer is empty and contain only the delimiter dollar, then it will says that the string is accepted by the grammar. So this is your shift reduce parsing.
Now I can explain the working of shift reduce parser by taking a suitable example. Now in shift reduce parsing, this is the stack implementation and how it will work to recognize a particular inputs. Suppose this is our string to be passed, id plus id star id, and it is delimited by dollar, and the start at initially stack contain a symbol dollar. What we do, we just read the input symbol from left to right and check whether the inputs are matched with the right side of the production. To match the inputs, we just push it onto the stack. So whatever be the handle which is being formed, it appear on the top of the stack. तो स्टैक के ऊपर जो भी हमारा हैंडल फॉर्म होगा, इट विल मैच विद द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन. सपोज बाय डिफ़ॉल्ट इट परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन. जैसे ही हमारा ये मैच परफॉर्म हो जाएगा, मीन्स स्टैक के टॉप का जो सब स्ट्रिंग है वो अगर राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन से मैच हो जाएगा, देन वी विल गेट द हैंडल एंड परफॉर्म द रिड्यूस ऑपरेशन. सो first it read the current input symbol id and perform shift operation. So id is here, then the next current symbol is plus id star id dollar, and it will perform the reduction operation. E tends to id. Why it perform the reduction operation? Because in stack there is a one symbols id, and this id is matched with the right hand side of the production. E tends to id. So this id is replaced with the corresponding non-terminal capital E. So we are here. Now at this point it read the current input symbol plus and perform the shift operation, because E is not going to reduce in any next further production, because we not have a such kind of production. So we perform the shift operation, we get E plus on the top of the stack. Now this as a whole is not a substring. This E plus is not a part of, is not a right hand side of the production. So it will again perform the shift operation and E plus id. Now again E plus id is not a handle in right hand sides of the production. So but first we match E plus id, then nahi hai, then plus id nahi hai, then we go for the id. Means we have to just match the suffix, we can say. ठीक. So this id is matched with the productions, replaced E plus E, we get E plus E. Then again perform the shift operation, star is shifted to the stack, then again we perform shift operation, id is shifted on the stack. Now id is reduced to E, and we then next E star E is a handle which appear in the productions. So E star E is reduced to E by applying the reduction operation. Similarly E plus E also is a handle, so it will recognize and reduce to E. So we get at last dollar E, and in the input buffer we get dollar. So this is the accepting state, and string is accepted by the grammar. Now this is your shift reduce parser when it will perform the shift operation and reduction operation. But there is a certain kind of limitation in shift reduce parser, such as कि recognizing the proper handle. What is proper handle? Means जिसके reduction से हमारा जो string है वो parse हो जाए. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, at this state we have a E plus E on the stack. तो क्या ये E plus E handle नहीं है? है. We should have to reduce this E plus E into E. ना वहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, हमने क्यों नहीं किया? बिकॉज वी नो दैट कि द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज हायर देन एडिशन ऑपरेशन. सो वी डिड नॉट रिड्यूस और परफॉर्म दिस ऑपरेशन फर्स्ट. सो वी मूव और यू कैन से वी शिफ्ट द करेंट इनपुट सिंबल स्टार ओवर स्टैक. हम इसको भी रिडक्शन परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिडक्शन परफॉर्म करते तो क्या होता कि हमारा प्लस ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाता, स्टार वाला ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होता. सो वी कैन से द शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कैन नॉट ईजिली डिटरमाइन विच हैंडल इज बीन गोइंग टू रिड्यूस एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो यहाँ पे ये इसका एक फेलियर है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का कि इम्प्रॉपर हैंडल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. So we can say how we can know the proper handle.
सपोज इस टाइम पे अगर हमारे पास यहाँ स्टार है, सो वी कैन से स्टार का प्रेसिडेंस इस प्लस के प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, सो वी परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन। सिमिलरली अगर यहाँ स्टार होता, यहाँ प्लस होता, देन उस सर्कमस्टांसेस पे हम क्या कहते हैं कि स्टार का प्रेसिडेंस स्टैक के कंटेंट के टर्मिनल का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो वी परफॉर्म रिडक्शन ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन। So that conflictivity is removed by applying the precedence rule. So we next study about the next parsing techniques, which is called operator precedence parsing techniques.